Assalamu alaikum everyone. This is Hashim Barraq. Welcome to the sixth special interest group session on cybersecurity. Uh, this is sixth in a series of sessions that we have done so far. Previously, we have focused on various very technical deep dives into different dimensions of cybersecurity. We have looked into how a network can be secured with faculty from NAMAL, where we really started from the basics and sort of understood the networks and how network can be secured by first understanding the vulnerabilities. Then we had a couple of sessions on security operation centers. We looked into how they can be established out of the day one, day two, day three models, and how that incident management is done through the use of security operation centers. We ran a couple of other sessions on in those areas surrounding SOC, which include SIEM solutions. Today, I'll be focusing on if you are an individual and you want to get into cybersecurity, or you're a business and you're worried about cybersecurity and you want to make sense of where to begin with. So I'll be sharing with you today on how to sort of make sense of the various players within the cybersecurity industry. And maybe if the time allows, I can go on to explain how you implement a cybersecurity policy. The second thing that I'll share with you is a very closely related area, which is of payments fraud. And the reason it is important is because it is such a huge industry these days that I tell this to whenever I'm talking on this topic is that this is more lucrative than drug trade. And we keep seeing these breaches paired with payments fraud. So we'll speak to that. I'll speak to that part also. A couple of housekeeping rules. If you have any questions, we will be having an open forum at the end of my talk. So please make use of that time and share with us your comments or questions. Uh, if any one of you is going to be leaving earlier than the time that we have set aside, you do not need to worry. We'll be making the recording of this session available on our website as well as through our YouTube channels. So this is the agenda that I've set for this talk. Normally we do have Dr. Arshad Ali with us. Dr. Arshad Ali is the president of SPINN Labs, and he would be sharing with us the sort of the vision and the reasons we established this initiative. Unfortunately, I think Dr. Saab is not with us today. Okay, so अस्सलाम वालेकुम Ji, Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम Welcome to the session, sir. I was just going over the agenda, and we were going to just right now move to the first part, which is opening remarks by you. So over to you, sir. अस्सलाम वालेकुम everyone. uh, I think we have been attending sessions since quite some time now, and one of the thing जो कि मैं हर session में कहता हूँ कि ऐसे इल्म का या ऐसी तालीम का बहुत कम फ़ायदा है जिस इल्म को हम अप्लाई ना कर सकें। और हमारे जो सोसाइटी है और जो हमारा सिस्टम है उसमें ये एक बहुत बड़ा इशू है कि लोग यूनिवर्सिटियों से तालीम हासिल करते हैं और फिर जहाँ अप्लाई करते हैं वहाँ से जवाब ये मिलता है जी आपका तजर्बा नहीं है। तो असल में तो कोई काम करेगा करने का मौका मिलेगा तो उसे तजर्बा मिलेगा। तो इस सिलसिले में जो एक बहुत इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है हमारी फैकल्टी को भी और स्टूडेंट्स को भी वो ये है कि ड्यूरिंग द स्टडीज अगर आप स्किल हासिल कर लेते हैं सो वो आपको वन स्टेप अहेड कर देती है एज कंपेयर टू एनी अदर एप्लीकेंट्स। और इंडिया में ये बहुत इफेक्टिव तरीके से लोग इससे बेनिफिट कर रहे हैं जबकि पाकिस्तान में कुछ अवेयरनेस भी नहीं है और कुछ लोग कोशिश भी नहीं करते हैं जिसकी वजह से वो फिर ये सारे प्रॉब्लम पेश आते हैं
कि हमारे तकरीबन हर साल कोई 9,70,000 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे होते हैं यूनिवर्सिटियों से, हर किस्म के डिसिप्लिन को मिला के। और अगर आप अमेरिकन, यूरोपियन, अब तो इवन चाइनीज कंपनीज को देखें कि वहाँ पे बंदे ने अगर इंग्लिश में बैचलर किया हुआ है या पॉलिटिकल साइंस में किया हुआ है, वो भी आईटी की कंपनीज में बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है, क्योंकि वो थोड़ी सी मेहनत करके वो सर्टिफिकेशन ले लेते हैं। और लास्ट टाइम अगर जिन साथियों ने ज्वाइन किया था आईबीएम, पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं कि उनका आईटी से कोई सरोकार नहीं था, लेकिन उन्होंने चंद सर्टिफिकेशन ली और अब आईबीएम पाकिस्तान में टीम लीड बने हुए हैं। So all these opportunities are available, but it is dependent upon how much efforts you make. तो ये जो स्पिन लैब का फोरम है, ये इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। एंड आई एम श्योर हाशिम अभी आप लोगों से ये डिस्कस करेंगे। तो अगर लोग इस चीज को समझ सकें और समझ के मेहनत करें, तो we will be more than happy to provide all kind of support which is possible. इसमें even during studentship या एज ए फैकल्टी अगर लोग स्किल्स को हासिल करते हैं, कोई सर्टिफिकेशन को हासिल करते हैं, तो उसमें भी एक्स्ट्रा पे की भी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, विच आई एम श्योर हाशिम विल शेयर। हमारा एक सेंटर ऑफ एक्सपर्टीज का प्रोग्राम है। हाशिम, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर इसके बारे में शेयर करें ताकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज बेनिफिट कर सकें। और अभी हम प्लान कर रहे हैं एक साइबर सिक्योरिटी में हैकाथॉन लॉन्च करने का। तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, नमल, these universities have shown interest to be partner in this particular program. So this will be another feather in the cap, I would say, for Pakistan to develop the expertise. क्योंकि अगर आपने recently एक report पढ़ी हो, सिर्फ इंडिया में by end of this year, which is 2022, जिसमें अभी 3-4 महीने रह गए हुए हैं, उनका इरादा है कि वो 2 लाख सर्टिफाइड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट प्रोड्यूस करेंगे। सो जस्ट इमेजिन, जब वो इंडिया में इतने लोग होंगे तो जितनी एब्जॉर्प्शन इंडिया में हो सकेगी वो इंडिया में हो जाएगी, एंड देन दे विल go to other countries for the opportunities. I am sure people will benefit whatever support we are providing. So over to Hashim for further discussion. Thank you very much, Dr. Saab. And I'll pick up from what Dr. Saab was saying is that many of you, I've spoken to you, I see in the list that I've spoken to sometime in the past, and you have mentioned to me that we want to start in cybersecurity, but you're struggling with where to begin with. And secondly, even if you are in cybersecurity, you understand a particular technology, let's say you would be really good in application security. But in order to understand where does that part that you know fits in the business aspects, where this is really deployed and put into production, that's what I'll be focusing today. And I'll start from the real basic quickly, and then I'll move on to other key areas. So when we talk about information security, there are really two things. We are securing information. That's it. And that information cannot be tactile. That's not something that you touch. It is either stored in audible or in written form somewhere in a system. So when we talk about information security, we're talking about protecting information, and secondly, protecting the systems where that information lies. That's where these terms that you see or hear every day, information security, comes from. So whenever you hear about information security, we're talking about information, protecting information, and protecting the data that makes up the information. When we come to information systems, uh, the information can be stored in your laptops, in your mobile phones, over cloud, maybe in some kind of a mainframe system, or maybe other systems. And there are many examples of that. And I'll come to that in a minute. Uh, Look at it from this perspective. Whenever you hear the term information security or information systems, can you see my screen? Because my screen is blacked out. Is my screen visible?
जी विजिबल है। ओके सॉरी। अच्छा, जब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात होती है तो in industry it means a couple of high level governance matters. So when we talk about information security, it means the risk management. Companies के अंदर risk departments होते हैं. That's what information security is. That's where information security is dealt with. There are board level governance initiatives that are where decisions or policy decisions are made. That's where information security comes in. फिर SOPs और procedures बनाए जाते हैं या guidelines बनाई जाती हैं. Now these terms may seem to you as very generic, but there's a specific purpose to each of these terms. For example, policy वो है जो board ने आपको दी. So it could be an information security policy issued by the board of an organization. उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है एक सीसो या एक डिपार्टमेंटल हेड के साथ मिलके एक सीसो इम्प्लीमेंट करता है. इम्प्लीमेंट करने के लिए वो एसओपीज या प्रोसीजर्स बनाता है एंड देन दे साइन दैट डॉक्यूमेंट एंड दे ट्रांसलेट द पॉलिसी इन द फॉर्म ऑफ डूएबल और एक्शनेबल प्रोसीजर्स और एक्टिविटी. सिक्योरिटी के अंदर जो मैं पॉलिसीज की बात कर रहा था, सो बोर्ड लेवल पे एक पॉलिसी बनती है, उसको एक सीसो या एक डिपार्टमेंटल मैनेजर सीसो के साथ मिलकर एक पॉलिसी और प्रोसीजर बनाता है, सॉरी एक प्रोसीजर या एसओपी बनाता है. Policy is a high level document which is really giving you an advice to do something. SOP और procedure फिर उसको translate करते हैं कि exactly what needs to be done, and I'll share with you more in couple of slides down the line. Guidelines are some things जो कि आपका risk department, maybe an industry association or maybe an international organization will issue that you can use to help secure your systems. So that is what generally in business information security is meant about. जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का मैंने आपसे शेयर किया कि जहां पे इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, what kind of systems are there? So they could be information technology systems, they could be OT, which is operational technology. Traditionally what we deal in our daily lives are the mobile phones, या laptops, या servers. So they are covered in the information technology paradigm and we need to protect them. But sometimes information is also stored या processed in operational technology, जो कि इंडस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, जहाँ पे ये स्केडा सिस्टम्स होते हैं. उन स्केडा सिस्टम्स की सिक्योरिटी इज अ वेरी बिग थिंग दीज डेज. What if I can get into your plant and I can Modbus is a protocol that is used and I can go inside by finding a vulnerability in Modbus protocol and then exploit that vulnerability, और मैं आपकी किसी मोटर की स्पीड तेज कर दूं and all of a sudden the whole production system comes down क्योंकि वो एक मोटर जल गई है and then your business starts making these losses. So OT security is big thing and there's of course information that is being processed through SCADA systems. इसी तरह physical security is also part of those systems जहाँ पे वो information पड़ी होती है. What if I come and आपकी किसी भी secure data को I try to breach it physically or chemically or maybe through some kind of a heat mechanism. So there has to be some security protection built in from physical intervention. फिर HR की security होती है, your human assets, जो human resources होते हैं, they're also considered assets these days. You need to protect those assets also. And then in a slightly different manner but very important way, legal and compliance protection from the what we can call it, from the sort of the unknowing or maybe being a victim of those legal and compliance issues which you did not intend to. But what if you have built your information security program by looking at what are the laws in the country, what are the regulators saying, and then you build your information security systems after taking those into account. So these are some of the components जो कि information system को make up करते हैं. In this specific information security, there are further different areas that one needs to look into when it comes to protecting them. So एक तो of course data है जिसकी मैंने आपको बात की, information data that makes up that information. We need to protect the data. वो data at rest हो या at motion हो, somebody needs to protect that. Then there's application security. वो data जिस application में use हो रहा है, normally it's not, I mean, it could be a word processor, it could be an Excel, it could be a software, it could be a browser. Anything that we use is essentially an application. हम उस hardware से जो interact कर रहे थे वो through application कर रहे थे, वो application हमें वो information
देरी होती है, लेरी होती है, तो उस एप्लीकेशन को भी किसी ने प्रोटेक्ट करना है। वो एप्लीकेशन जिस डिवाइस पे है, it's what is known as endpoints in the industry. So somebody needs to protect that laptop or mobile phone. Mobile security is a significant part within the endpoint security, so it's looked at separately, significant. Then there's network security. ये device किसी network के साथ connected होगा, so somebody needs to protect the information leaving my endpoint and going to the other end of the network. So उस process में network की जो security है, that's a very important area. Then एक और जो की इंपॉर्टेंट एरिया है वो है सीम सॉल्यूशंस। सीम सॉल्यूशन से मुराद वो होती है कि जो आपके एसेंशियली दे कंडक्ट दिस इंटेलिजेंस कि जो इंसिडेंट्स या ट्रैफिक जा रही है, दे एनालाइज एंड दे आइडेंटिफाई कि if there is alert that could be a threat to the organization, or and then they classify those based on the risk assessment. So SIEM is another area, and in each of these areas दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं। अगर मैं आपको एंड पॉइंट में बताऊं तो कैस्पर्स की है, सिमेंटिक है, जो एंटीवायरसेस हम यूज करते हैं, जो स्ट्रैंड माइक्रो, सोफोस है। वेब के अंदर अगर आ जाए एप्लीकेशन के अंदर, तो गेटवे की सिक्योरिटी में सिमेंटिक काम करता है। सीम सॉल्यूशंस के अंदर और थ्रेट मैनेजमेंट, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी, दैट्स द वे यू लुक एट सिक्योरिटी नाउअडेज कि मैं एक थ्रेट के आने से पहले थ्रेट को हंट करूं, and based on that intelligence I do that patch management. तो उसमें there's solutions called unified threat management. Companies like Fortinet, पाकिस्तान में इसकी बहुत सारी firewalls यूज होती हैं, they provide solutions. फिर नेटवर्क्स के अंदर पालो अल्टो है, सीम सॉल्यूशंस में IBM है, स्प्लंक है। फिर डेटा के अंदर डेटा लीकेज प्रोटेक्शन होती है, उसमें सिमेंटिक हेल्प करता है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी में IBM है, ह्यूलेट पैकर्ड है, वेराकोड है। इसी तरह मोबाइल सिक्योरिटी में मोबाइल आयरन है, अगेन IBM इज देयर। दीज बिग जायंट्स आर ऑलवेज इन ईच ऑफ दीज एरियाज। फिर डेटा के बैकअप एंड रिकवरी, दैट्स अ बिग एरिया। व्हाट इफ माय कराची में वो हर साल एक आता है विंटर सॉरी मानसून सीजन में, वो सारी चीज़ें फ्लड हो जाती हैं, और अगर मेरी वहाँ पे एक दुकान है और वहाँ पे मेरा एक सर्वर रूम है, तो आई नीड टू वरी अबाउट यार अगले साल जब बारिश होगी तो मेरे इस डाटा का बैकअप होना चाहिए। So data backup is a whole area within this security domain. फिर आइडेंटिटी एंड गवर्नेंस है। आजकल हम सब लोग घर से काम कर रहे हैं। Who should we allow access to our systems? What kind of access that they should be given? Should it be role based? Should it be on a need basis? And how do you manage that using systems? So identity and governance के अंदर फिर Oracle देता है, there's a company called CA, there's a company called SailPoint, and then of course these companies like SAP and IBM. फिर नेटवर्क विजिबिलिटी, नेटवर्क मॉनिटरिंग है, उसके अंदर की साइट है। एंड द रीजन आई एम मेंशनिंग दिस टू यू, ऑल ऑफ दीज कंपनीज आर लुकिंग फॉर पीपल हु have skills in their products, who have skills in these areas, and then specific skills in their technology stacks. अच्छा, अब why should we worry about all of this? Why do I need to protect my laptop? Why should I protect my email systems, phishing threats? All of the information security revolves around three core pillars, which is about maintaining the confidentiality, integrity, and availability of the systems. So for example, there is a proprietary information जो मेरे system में पड़ी हुई है, and I want to maintain the confidentiality so that it does not go into the hands of somebody who's not authorized to do that. These information security systems help us achieve this goal. अगर मैं इंटेग्रिटी की बात करूं तो आई नीड टू बी श्योर कि जो कोड मैं लिख के अपने कस्टमर को दे रहा हूं, इन द प्रोसेस ऑफ दैट ट्रांसफर वो कोड कहीं मॉडिफाई तो नहीं हो गया। उस कोड की जो इंटेग्रिटी या एक्यूरेसी या कंप्लीटनेस है उसको मैंने इंश्योर करना है, एंड देन यू कैन एक्सपैंड दिस टू ऑल ऑफ योर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। सो एनी कंपनी, एनी गवर्नमेंट, एनी इंडिविजुअल, इवन अस, I would never want कि मेरी जो emails है उसके अंदर कोई somebody gets into my email account. So I need to make sure कि वो confidential भी हो, उनकी integrity भी बरकरार है। Last but not the least is availability. मेरी confidentiality भी maintained है, I know कि integrity भी data की maintained रहेगी। What if मुझे system का access ही ना मिले, तो फिर मैं क्या करूँगा? ये ransomware attacks हैं, which are pretty common these days. What they do is they do a breach of availability. ठीक है, आप ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी भी कर सकते हैं, इंटेग्रिटी भी कर सकते हैं, बट व्हाट इफ आई डू नॉट, आई ओनली व्हाट आई डू इज मैं सिर्फ आपको सिस्टम का एक्सेस बंद कर दूं अनलेस यू पे मी $1 million और मे बी 10,000 बिटकॉइंस।
So that's what ransomware is all about, where you try to make the system unavailable. Just imagine, ये नादरा आजकल वो कोविड के सर्टिफिकेट्स इशू कर रहे हैं. इफ समबडी हैक्स इनटू दैट सिस्टम एंड मेक्स दैट सिस्टम अनअवेलेबल, लोगों ने फ्लाई करना है, वो कोविड के सर्टिफिकेट्स प्रिंट करने हैं, एंड द सिस्टम ऑल ऑफ अ सडन बिकम्स अनअवेलेबल. सो देयर इज अ ह्यूज कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट. तो जब भी आप साइबर सिक्योरिटी की बात करें, pretty much all of the people's processes and the technologies are aiming to achieve these three things: confidentiality, integrity, and availability. अच्छा, अब when you're getting into cyber security and you want to understand, जैसे मैंने आपको कुछ areas बताए टेक्नोलॉजी के, but in terms of peoples, in terms of societies, वो कौन से players हैं जो information security में खेलते हैं और वो क्या करते हैं? Maybe you want to understand this before making a decision for yourself, or maybe for the company you work for, or maybe that's your own business that you want to secure. So you may want to know कि government के vector में क्या हो रहा है, इंडस्ट्री क्या कर रही है, जो बिजनेसेस हैं. एकेडेमिया इज अनदर इंपॉर्टेंट एरिया व्हेन इट कम्स टू रिसर्च, क्योंकि ये जो थ्रेट्स हैं ये दे इवॉल्व ऑन अ डेली, ऑन अ मिनट बाय मिनट बेसिस. सो एकेडेमिया में देयर इज रिसर्च गोइंग ऑन, यू बेटर बी अवेयर ऑफ दैट. फिर प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं, जैसे इन आईटी इंडस्ट्री वी हैव दिस एसोसिएशन कॉल्ड पाशा. आप लोगों ने खबरों में सुना होगा एप्टमा है, टेक्सटाइल एसोसिएशन की, रोज उनकी खबरें आ रही थी. सो देयर आर एसोसिएशंस इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी दैट इशू द गाइडलाइंस जो मैं आपको पहले मेंशन कर रहा था. फिर ऑफ कोर्स वेंडर, सप्लायर्स एंड बिजनेस, जो मैंने अपनी कंपनीज के नाम दिए, व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज दे डू एंड व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट्स दे प्रोटेक्ट फ्रॉम. देन देयर आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो यूएन की हैं, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, एंड सो ऑन. I'll go in a little detail on each of these now. गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट आपको पॉलिसी मेकिंग करके देगी. गवर्नमेंट ने अभी कुछ अर्सा पहले साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी इनिशिएट की. उस पॉलिसी की बेस पे दे मेक द लॉज, दे इन्फोर्स द लॉज, फिर उस लॉज की प्रोसिक्यूशन, फिर स्टैंडर्ड्स एंड सर्टिफिकेशन. दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट एरिया कि भाई हर कंट्री की नॉर्मली अपनी एक नेशनल बॉडी भी होती है जो कि आपको स्टैंडर्ड्स डिफाइन करके देती है कि भाई दिस इज हाउ एनटीएसपी या दिस इज हाउ जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, फॉरगेटिंग नेम, बट वो क्या स्टैंडर्ड्स रखे हैं अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, क्या सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, एंड देयर इज अ सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म to verify that those standards have been met. फिर सर्च का एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि नेशनल लेवल पे नॉर्मली दीज आर टीम्स that are always analyzing the threats coming in, और फिर वो teams, so they're different concepts, but one way to look at it is कि वो सर्च जो है नेशनल लेवल पे थ्रेट्स को मॉनिटर करके फिर सॉक को दे दी और सॉक उसको एनालाइज करता है. सो गवर्नमेंट के ये कुछ variables हैं which come into play when you look at cyber security from government's angle. Industry क्या करते हैं? Industry में why it's important to worry about cyber security? Because you have banks have transactional and the financial data and the customer's information. Telecom, we always we use mobile phones so extensively these days. सब पे 2G भी है, 3G भी है, data भी है और GSM भी है. So उनकी security is a big area. Military of course that's understandable. Then federal, provincial और local level पे क्या 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 डिपार्टमेंट्स हैं जिनको सिक्योर करना है, क्योंकि देयर आर इंडस्ट्री एसोसिएशन दैट वर्क विद द रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज, एंड इफ यू आर वरिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सोसाइटल प्रॉब्लम, यू वर्क इन टैंडम विद द फेड, प्रोविंस या लोकल बॉडीज. फिर ऑफ कोर्स द एंटरप्राइज. एकेडेमिया में यू हैव यूनिवर्सिटीज एंड देन हाई स्कूल. हमारे यहाँ तो अभी यूनिवर्सिटीज पे विद फोकसिंग, एंड देयर आर लॉट ऑफ जैसे नेशनल सेंटर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अंदर डिफरेंट लैब्स हैं. देयर इज नेशनल सेंटर ऑन साइबर सिक्योरिटी जिसके अंदर फिर डिफरेंट लैब्स हैं जो ईच ऑफ द सिग्निफिकेंट एरियाज को फोकस कर रही हैं. लेट्स से सिक्योरिटी ऑफ स्केडा सिस्टम्स, लेट्स से सिक्योरिटी ऑफ critical infrastructure, security of networks, security of telecom infrastructures. So all of these players then are contributing to cybersecurity, and as somebody who wants to study, who wants to implement, or who wants to provide services, they would want to know what are these institutions doing and what kind of information they are producing that you can use. इस तरह ये SANS है, Center of Internet Security है, they issue these information packs which you can use. प्रोफेशनल एसोसिएशन जो मैंने पहले बताया, इसाका है, ये सर्टिफिकेशन ऑफर करता है. इफ यू वांट टू गेट स्किल्ड, ऑलराइट, आई हैव एन आइडिया दैट मैं ना टेलीकॉम के अंदर जो वायरलेस कम्युनिकेशन है उसकी सिक्योरिटी पे काम करना चाहता हूँ, तो देयर आर बॉडीज दैट इशू द सर्टिफिकेशंस और द स्टैंडर्ड्स दैट यू कैन यूज. ये पीसा है, ये क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस है पाकिस्तान की, ये दो हैं वगैरह. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीजा, अब ये डीजा जो है दैट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएस की है. ये ईच एंड एवरी प्रोडक्ट दैट इज इन द मार्केट दे इशू दीज
STIGs, Security Technology Implementation Guidelines. Every day I receive emails from them every day. ये बताते हैं कि भाई Adobe का नया वर्जन आ गया, हमने इसकी सिक्योरिटी असेसमेंट कर लिया, ये उसके रिजल्ट्स हैं. ENISA यूरोप की है, they issue these guidelines. NIST again US का है, then International Telecommunication Union. ये these are the people who, anybody who's interested in cyber security, you may want to go ahead and look at their websites. ये तो था एक ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का लैंडस्केप जो मैंने आपको दिखाया. Now let's go into an organization, वहां पे साइबर सिक्योरिटी कैसे हो रही होगी. ये मैंने बड़ा हाई लेवल यहाँ पे डिफाइन किया है, अगेन बेस्ड ऑन दिस. बाय द वे व्हाटएवर आई एम प्रेजेंटिंग टू यू, दिस इज नॉट अ प्रोप्राइटरी इन्फो, ये भी मैंने भी ऑनलाइन पढ़ के लिया है, ठीक है. तो अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साइबर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी हो तो तो उसके लिए यू कैन डिफाइन 4 key areas और प्लेयर्स और एंटिटीज जो कि इन्वॉल्व होती है. पहला तो बोर्ड है, जैसे मैंने आपको बताया, बोर्ड वो है जिसने डायरेक्शन सेट करनी है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की. व्हेन इट कम्स टू साइबर सिक्योरिटी वी आर प्राइमरली टॉकिंग अबाउट द साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज. बोर्ड जो है वो पॉलिसीज इशू करेगा. सीसो या जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होता है या CRO, मे बी बोथ ऑफ देम, it varies between organizations. Then they go on to translate that policy in the form of an implementable SOP या procedure या guidelines. IT users वो हैं जिन्होंने CISO या CRO के साथ मिलके IT systems के context में उस policy को implement करना है. बिजनेस यूजर्स ये वो यूजर्स हैं जो कि लेट्स से मेरी या आपकी तरह के, मेरा पर्सनल एरिया, आई एम अ नॉन टेक्निकल पर्सन, लेकिन लेट्स से मैं आई एम इन HR, आई कम टू ऑफिस डेली. सो एज अ बिजनेस यूजर मैं कैसे साइबर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने में या मैनेज करने में कंट्रीब्यूट करता हूँ ऑन अ डेली बेसिस. सो दे आर अनदर बिगर प्लेयर. बोर्ड की अगर बात की जाए तो once they have set the policy, they will assign the responsibility and authority to maybe a CISO, maybe a CRO, maybe a chief digital officer, all the C-level suite. उनको वो responsibility authority देंगे which will be defined by the policy. Based on that, resources are allocated. Okay, you use these resources and the authority and responsibility to implement those policy objectives. And then of course board does the review and accountability also. अच्छा, सीसो और CRO क्या करता है, वो इन स्टेप्स के थ्रू जो मैंने आपको बताया वो उस बोर्ड की पॉलिसी को कन्वर्ट करता है, उसको कंटिन्यूसली इम्प्रूव करता है. सो मेक दिस एनुअल सिक्योरिटी प्लान्स. स्विफ्ट, अगर आप बैंक में हैं तो स्विफ्ट जो है विच इज़ वेयर ऑल द सिग्निफिकेंट मनीज आर राउटेड थ्रू ग्लोबली, तो स्विफ्ट की गाइडलाइंस होती हैं, स्विफ्ट के एनुअल ऑडिट्स होते हैं. तो सीसो मेक्स अ पॉलिसी कि मैंने स्विफ्ट के साथ कैसे कंप्लायंस करनी है. And there is a continuous review and improvement going on a daily basis or maybe on a monthly or quarterly basis. अच्छा, IT user क्या करेगा? IT user would work with the CISO's team to understand the policy. उसकी बेस पे ऑर्गेनाइजेशन में एक रिस्क असेसमेंट करेगा. रिस्क असेसमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एरियाज. इसमें बिकॉज ऑफ in the interest of time, मैं briefly आपको explain करता हूँ. इसमें what you will do is कि you will create a map of all the IT systems in the organization. Then you will identify कि ये assets कि owners कौन है, who are the administrators, who are the deployment professionals, who are the developers, who are the architects, and then you assign risk to each of those IT systems. So at the end of the day, you have essentially a risk assessment or a scoring mechanism. इसकी base पे you can take further actions. If it's a high risk item, that's the kind of SOP or checklist that I need to develop to make it secure. जब आप वो कर लेते हैं तो आप उन SOPs को यूज करते हैं, कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल, a control could be कि somebody came into an office और वहाँ पे एक्सेस कंट्रोल नहीं था, so anybody could just simply walk in. तो आपने एक कंट्रोल लगा दिया, आपने पहले असेस किया कि यार कौन कौन लोग आते हैं, किस टाइम पे आते हैं, किस से मिलने आते हैं. फर्स्ट यू डू दिस रिस्क असेसमेंट. उसकी बेस पे आपने एक गाइडलाइन बनाई कि सुबह 9 से 5 बजे तक आप कार्ड पंच करके अंदर आ सकते हैं. 9 से पहले और 5 के बाद जो है यू विल नीड प्रॉब्ली एन एस्केलेटेड अप्रूवल. सो ये सारे काम आपको एक IT यूजर, बिकॉज रिमेंबर मैं IT सिस्टम से कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूँ. सो you implement these kind of controls and checklists. Then there's incident management. What if there's a breach? तो उसका क्या करना है? So that's a whole universe in itself. So ये काम normally एक IT user कर रहा होगा in the context of cyber security policy implementation.
बिजनेस यूजर क्या कर रहा होगा? बिजनेस यूजर को साइबर सिक्योरिटी की टीम ट्रेनिंग देगी, सिक्योरिटी की अवेयरनेस की, किसी स्पेसिफिक टूल की। उनको बताया जाएगा कि अगर आपने पॉलिसी फॉलो करनी है तो कैसे करनी है। As a business user, maybe I want to implement for example, a procurement procedure. The traditional के let's say मैंने कोई चीज़ परचेज करनी है और मैंने 3 कोड लेने हैं, तो वो कोड मुझे ईमेल पे आ जाते हैं, बट मे बी इफ दैट्स नॉट सिक्योर, तो आई नीड टू बिल्ड अ प्रोसेस जहाँ पे वो कोड्स मुझे पासवर्ड प्रोटेक्टेड होके आए। ठीक, सो अ बिजनेस यूजर may want to do this, but then a business user needs to make sure कि ये कोर्स जो है ये मुझे सिक्योरिटी पॉलिसी और उसकी गाइडलाइंस और उसकी प्रोसीजर्स के मुताबिक आ रहे हैं। एंड देन बिजनेस यूजर का एक्सेसेस आपने कैसे मैनेज करने हैं, इंसिडेंट्स बिजनेस यूजर ने कैसे रिपोर्ट करने हैं टू द सीईसओ और द सिक्योरिटी टीम। तो ये जो कुछ प्लेयर्स हैं ये मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी बनाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन उन आउटसाइड प्लेयर्स को सामने रखते हुए अपनी साइबर सिक्योरिटी को डिफाइन करती है। Now I'll take a shift from cybersecurity to financial crimes. Cybersecurity, whenever we're talking of cybersecurity, there's essentially some kind of a breach or a violation of the three factors you mentioned. It could be a breach of confidentiality, it could be a breach or violation of integrity or availability. And that comprises a cybersecurity incident, or that's where cybersecurity kicks in. For example, somebody breaches the mobile application of any bank in Pakistan. तो वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की जो इंसिडेंट हैंडलिंग टीम है दैट वुड किक इन, ऑल द लॉज एंड रेगुलेशंस वुड किक इन, स्टेट बैंक आ जाएगा, रेगुलेटर्स आ जाएंगे कि भाई इसको आपने ऐसे हैंडल करना। बट व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट ब्रीच, एनी इंट्रूडर उसको ब्रीच करने के बाद क्या करता है, probably that's the point where financial crimes would kick in. Maybe the intruder would want to make funds transfer. Bangladesh Bank, I mentioned this in a couple of earlier 6 sessions also. Somebody got into the Bangladesh Bank, central bank's systems through their printer. अब प्रिंटर की ब्रीच तो साइबर सिक्योरिटी कवर करेंगे, बट उसके बाद वो जाके क्या करते हैं, दैट्स द एरिया जहाँ पे compliance kicks in, risk department kicks in, international organizations kick in, or essentially financial crimes are where, if you want to really define that, so it's normally around a financial or a personal gain that you want. In order to do that, of course, you have to first breach a system. ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये वेरी करती है ऑर्गेनाइजेशंस. Some organizations view cybersecurity at one end of the continuum and financial crimes at the other end of the continuum. But many organizations, because of the complexity nowadays, all the systems are interconnected. There are multi-channel payment systems. मैं एक दुकान पे जाऊंगा, मैं उनको पेमेंट करूंगा, या लेट्स से मैं उसकी ऑनलाइन शॉप पे जाता हूँ, मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ और मैं उन्हें कहता हूँ कि पेमेंट मैं आपको कैश ऑन डिलीवरी पे दूंगा और डिलीवरी मैं आपकी दुकान से दूंगा. अभी डिफरेंट चैनल्स इन्वॉल्व हो गए, एंड एन इंट्रूडर कैन violate or breach all of these channels. For example, अगर card skimming is a pretty common fraud happening in payment industry. अगर आपका कार्ड किसी ATM मशीन पे लगे और डिवाइस से somebody has stolen the credentials, what they can do is कि they can route the money कि यार ठीक है कुछ दिन तो ATM से निकाल लेंगे थोड़े थोड़े पैसे करके, उसको अलर्ट मिलेगा तो उसको पता नहीं लगेगा, कुछ पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर देंगे कहीं और पे, कुछ पैसे जो हैं ये इजी पैसा इनमें ट्रांसफर कर देंगे, कुछ पैसे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफर हो जाएंगे. So there's a whole complexity around it. So in other words, depending on the organization or the institution, these are the two areas which are very interconnected, or they can be looked at entirely separate avenues, when it comes to protecting the organization. Financial crimes में ये कुछ areas हैं which are really important, and there's a good reason that I'm mentioning these areas because we work with banks or companies who worry about these aspects. Anti-money laundering हो गया, politically exposed persons हो गया, countering financing of terrorism हो गया, sanction screening हो गया. हमारी कौम की कलेक्टिव मेमोरी में वो एक F-16 की sanctions जो पाकिस्तान में लगी थी 90s की वो घूमती हैं. तो जब आपने सैंक्शंस की स्क्रीनिंग करनी है, कोई भी स्टेट या इंडिविजुअल या बॉडी इफ दे आर डूइंग सम ट्रांजैक्शंस थ्रू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उस इंडिविजुअल को या उस अकाउंट होल्डर को एंड उसकी होने वाली ट्रांजैक्शन को स्क्रीन करना और असेस करना कि इस ट्रांजैक्शन पे या इस बंदे पे कोई सैंक्शन तो नहीं लगी हुई, आइदर इन इंटरनेशनल लॉज और लोकल लॉज. बैंक्स एंड दीज पेमेंट कंपनीज दे नीड दीज सॉल्यूशंस. And with the ever increasing complexity of laws,
इसकी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती जा रही हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, CFT, ये तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है, फैटक का हम रोज़ खबरों में सुनते हैं। बैंक्स ने, आप सबने देखा होगा कि प्रोसीजर्स अपने बड़े फास्ट कर दिए हैं। इवन आप अपने अकाउंट से विड्रॉ करने भी जाएंगे तो किसी और ब्रांच से, तो दे आस्क कि अपना ओरिजिनल ID कार्ड दें। तो एंड द वे बैंक्स डील विद दिस इज, हमारे यहाँ तो चले थोड़ा वो हो गया कि यार ID कार्ड दिखा दें, बट ग्लोबली दैट्स नॉट द रिकमेंडेड अप्रोच। दे हैव सिस्टम्स जो कि इसको डिटेक्ट करते हैं। फिर क्लेम्स फ्रॉड इज अनदर एरिया। क्लेम्स फ्रॉड में पाकिस्तान में मेडिकेयर इतनी कॉमन नहीं है, बट इन द वेस्ट और द एडवांस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर हेल्थ इंश्योरेंस इज प्रीटी कॉमन, वहाँ पे उससे रिलेटेड रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। यू सो दैट कुड बी अ डॉक्टर सबमिटिंग फॉल्स क्लेम्स कि मेरे पास इतने पेशेंट्स आए। And when we are talking about advanced economies, these claim fraud run into hundreds of millions of dollars. So there are solutions specifically helping governments detect and prevent that fraud in that claims industry. It could be insurance claim related to transport, vehicle insurance. It could be medical, जो medical insurance के frauds हैं वो भी हो सकते हैं, और it could be personal insurance or similar other claims fraud happening. And it is risky है कि there's always a risk there's always a risk where you want to look at a account holder or somebody who has invested in any of your instruments at the banking company, किसी bond में, किसी loan note में किसी ने invest किया हुआ है या किसी और instrument में invest किया, and you want to assess कि जिसको मैं ये issue कर रहा हूँ, ये loan note या ये investment product, तो उस entity का risk assess करने के लिए उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसमें ये आता है कि where is this person coming from। अगर ये बंदा पाकिस्तान से है तो just flag it out, और इस पे तो अगर मैं न्यूयॉर्क के बैंक में खोलने जा रहा हूँ तो दे वुड वांट कि अच्छा आप तो पहले AML और आप पे CFT की सारी फॉर्म फिल करने होंगे, वो जो KYC का प्रोसेस होता है। सो ये सारी चीज़ें आपको सॉल्यूशंस देते हैं। एंड each of these areas there's a huge demand in the industry, and what we are hoping is we're working with these customers today. Just to give you an example, I was at Nurse few hours back and we met with the prorector there, and we were there's a huge faculty जो कि AI में काम करती है। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो एक तो तरीका ये है कि स्टेट बैंक आपको कह दे कि $10,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शंस पे ना सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट, जो ऐसे रिपोर्ट कहते हैं, वो हर बैंकर ने जनरेट करके स्टेट बैंक को भिजवा देनी है। ये रेगुलेटरी रूल्स हैं जिनके थ्रू आप इन फाइनेंशियल क्राइम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। या मैं कोई लीनियर रूल अपने बैंक की पॉलिसी के मुताबिक बना दूंगा कि भाई अगर एक बंदे के अकाउंट से उसकी सैलरी आती है उसको 50,000 रुपये, लेकिन उसके अकाउंट से ट्रांजैक्शंस रोज हो रही हैं 10 लाख रुपए की, तो मे बी आई नीड टू जनरेट एन SAR रिपोर्ट। ठीक है, सो दीज आर सॉर्ट ऑफ द लीनियर रूल्स दैट अ बैंक कैन इम्प्लीमेंट, or that the regulation can force you to implement a rule. But what happens is, even though banks or financial institutions are implementing these kind of linear rules, there's still a huge area where the fraud or the financial crime goes undetected. And that obscure area, उसके अंदर there is a huge opportunity कि आप AI और data analytics को use करके you find that financial crime, you find that claims fraud, you find that payment fraud. And so with this, I'll stop sharing for a moment and share with you the solutions, a quick summary of the solutions that I am focusing on right now. And if any one of you would be interested, I would love to talk to you after this call to see how you can sort of learn those solutions and help our customers in reducing the. जी हाशिम, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े डिटेल तरीके से ये सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि इन सारे जो प्रोसेसेस हैं इनमें जो वर्ल्ड लेवल पे एक्सपर्टीज हैं वो बहुत कम अवेलेबल है, और हमारी ख्वाहिश ये है कि अगर पाकिस्तान में लोग इन एक्सपर्टीज में अपने आप को ट्रेन करना शुरू कर दें तो उनके लिए वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी। हाशिम, जब आपका लैपटॉप हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। जी श्योर। तो इसमें हाशिम से मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि आप वो पाथवे भी बताइए। वजह ये है कि
जो साइबर सिक्योरिटी है उसके बारे में लेक्चर भी बहुत देते हैं, इंटरनेट पे भी बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन वो सिरा के एक बंदा अगर साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्टीज हासिल करना चाहता है तो वो शुरू कहाँ से करे, और उसके शुरू करने के बाद कौन सा पाथ फॉलो करे कि उसके लिए ये अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो जाएं, तो ये काइंडली जरूर बताइए आप। जी श्योर डॉक्टर साहब, ऑलमोस्ट देयर। और इसमें जो मैंने आपसे सेंटर ऑफ एक्सपर्टीज की बात की थी, जो कोई यूनिवर्सिटी भी सेंटर ऑफ एक्सपर्टीज बनाती है उसमें डिफरेंट एक्शन पॉइंट्स हैं, उन एक्शन पॉइंट्स को अगर फॉलो करें, जैसे कि कस्टमर को किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे प्रेजेंटेशन देनी है, कस्टमर की असेसमेंट करनी है कि वो इस प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज़ कर सके, अपनी एनवायरनमेंट में इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कस्टमर के सिस्टम की इंसाइट होना बहुत ज़रूरी है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको अगर एज ए स्टूडेंट आप लोग इनमें एक्सपर्टीज गेन करते हैं या एज ए फैकल्टी, so these could become the paid opportunities. Hashim, are you ready? जी, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। जी आप शेयर कीजिए। जी मैंने स्क्रीन शेयर किया। जी नजर आ रही है। So what you see here on the screen is the way I look at the center of excellence. किसी भी प्रोडक्ट को अगर हैंड्स ऑन सीखना है तो फर्स्ट यू नीड टू स्टार्ट विद द लर्निंग ऑफ दैट प्रोडक्ट. What you see here is a set of folders or the information packs that I have on one solution. Uh, in a center of excellence, the opportunity that we are sharing is, okay, if you're interested, we can help you learn that solution. Learning के अंदर फिर of course there are different aspects to it. There are certain courses, there are certain labs, there are certain certifications or badges that one needs to go through in order to build that knowledge and verifiable credential जो कि कल को Microsoft या IBM या किसी भी और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर को चाहिए होंगे if they want to open their system to you. So the first stage is learning. In this process, if you gain a certification successfully, we can reimburse the cost. You become eligible for that. Similarly, once you हाशिम लर्निंग को जरा ओपन करेंगे, इस टैब को जरा ओपन करेंगे। this is which kind of specific to this solution that I'm working on. Is safer payments hai. So there is a अच्छा whole collateral of information that is available. There are certain PDFs, there are implementation guides, solution briefs, documents, workshops available जो कि आप use कर सकते हैं to learning. And if any one of you is interested, I can make this available to you. Now, once you have learned the solution, you can then go out in the market and then you can start marketing the solution. Marketing आजकल सबसे ज़्यादा even at enterprise level digital landscape के through हो रही है. So we help you market the solutions also. And if you help us do that, we will pay you for this. So it could be writing a blog, it could be marketing through other digital platforms, social media. It could be running a webinar. You know, you've become so expert कि आप अब webinar उस पर run कर सकते हैं. So we'll pay you for that. So that's another activity that you can do. जब आप marketing कर लेते हैं तो you can go out and sell the product. So selling is a whole science in the sense that first you need to find the customer, then you need to go out and talk to the customer, you need to find the pain points. At certain levels, there's a certain value that you are bringing. And once you do that, we start paying for that. So one of the ways that you can earn money during selling is by having a conversation with the customer, where you present to the customer, let's say in the form of a business or a technical presentation, and you share with the customer how this solution solves your problem. So that's a paid opportunity. इसी तरह अगर आप
कस्टमर के साथ बैठ के एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट डिफाइन करते हैं कि आपने अगर मोबाइल बैंकिंग के अंदर पेमेंट फ्रॉड रोकना है तो दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ द सोल्यूशन दैट आई एम प्रपोजिंग. This is the component architecture. These are the functional diagram. This is the SOW. This is how we will perform the services. These are all paid activity that you can do, and of course will help you do this along the way. And then in industry you eventually reach the level of what they call the solution architect. A solution architect in the technical dimension is really the peak of it, in many ways, where you have deployed a solution, you have developed a solution, you have administered a solution, you have analyzed the solution, and now you're in a position where you can talk to any customer, understand the problems, and propose a solution without outside help. And a solution architect, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो क्लाउड एरिना में IBM का क्लाउड इज वन ऑफ द की प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री. IBM के क्लाउड में पाकिस्तान में मिडल ईस्ट में देयर आर टू सोल्यूशन आर्किटेक्ट्स. पूरे मिडल ईस्ट उनके जो रीजन है उसके जो कस्टमर्स होते हैं उनको जब भी कोई मसला आता है देयर आर टू आर्किटेक्ट्स दैट हेल्प द कस्टमर्स. कैन यू इमेजिन दैट कि वो दो लोग पूरे इंडस्ट्री को संभाल रहे हैं IBM के एटलीस्ट इन द मिडल ईस्ट रीजन. So that's the importance that or the pathway that you can eventually go to. And in this process, if you let's say you're so good at it that now you become a product leader. मैं जी अब claims fraud की industry veteran हो गया हूँ, so you can become the industry leader also. And these are all paid opportunities. Of course, it takes certain time to reach that kind of a level, but that's the roadmap that we have. इसी तरह many of you are from academia, so maybe you would want कि यार नहीं मैं तो इसको पढ़ाना चाहता हूँ. So yes, you can also go out and teach what you learn to other customers or other individuals who are using that product. That's also a paid opportunity. इसी तरह we are also in the process of defining a hackathon in the financial crimes arena, and we'll be sharing the details as soon as I have those ready to be shared. The next step that you can do is, if any one of you is interested, जाफर आपके साथ ईमेल एड्रेस शेयर कर देते हैं चैट विंडो में, एंड जाफर वो आप चैट में प्लीज शेयर कर दें, एंड देन यू कैन सेंड मी एन ईमेल, एंड आई वुड बी हैप्पी टू गेट ऑन अ कॉल एंड नो व्हाट यू वांट टू डू. So with this, I can stop, and if anybody have any questions or queries, let's see. Okay. हाशिम, मेरे ये क्वेश्चन है कि अगर एज एन इंडिविजुअल कोई ये सीखना चाहे तो वो भी अप्रोच कर सकता है, या सिर्फ यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर है वो इसको कर सकता है? Both are possible. Both are possible. Good. So, are there any questions or comments? Yes, I have a question. I was wondering if you can answer that. This is a different question, but अगर आप इंट्रोड्यूस कर दें. मेरा ख्याल मुदस्सर आप बोल रहे हैं? जी, मैं डॉक्टर मुदस्सर बात कर रहा हूँ, फास्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ. जी, थोड़ी आपके साथ इंटरेक्शन भी रहता है. जो हाशिम, थोड़ा सा मेरे जहन में ये क्वेश्चन आ रहा था कि आपने बहुत सारी इधर अपॉर्चुनिटीज बता रहे थे, एंड यू सेड दीज आर पेड अपॉर्चुनिटीज. तो पेमेंट बिजनेस प्लान क्या है? व्हाट इज द पेमेंट मॉडल? आप कैसे पे कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल, अगर मैं टीच कर तो ओके, यस, दिस इज समथिंग दैट आई एम इंटरेस्टेड इन. मैं पढ़ाना चाहूंगा उस चीज को, मैं लर्न भी करना चाहूंगा, लेकिन व्हाई आई वुड गेट पेड फॉर इट? ये बात कुछ समझ नहीं आ रही. ये इसमें अगर हशमत आप काइंडली इसको थोड़ा सा वो कर दें, उसके बाद हाशिम जवाब दे देता है. इज इट ओके? Yeah, of course, good with me. हशमत, इज इट पॉसिबल? अगर आप अवेलेबल नहीं हैं तो फिर हाशिम जवाब दे देता है. Yeah, I think चलें. हाँ, yeah. आप कर. So as to the question why pay, I think that's a value that you are delivering
to the people in your class. Just like any professor, who teach in a university, so you're teaching the students, and there is a transfer of value happening, and the student pays the fee in order to get that knowledge or learning from you. Similar to that, if there's a solution, for example, IBM Safer Payments है, ये payment fraud को रोकता है, and if you help a customer understand that solution, उसका आप course पढ़ाते हैं, so there's exchange of value happening, and it's always fair to pay for the value transfer. So that's why we would like the person is remunerated for that teaching that solution, number one. And the second part of your question was probably the how this will be paid. Is this correct? Yes, exactly. Okay, so the how, as I understand, would be is a function of the number of students that are there in the class. So the number of students would define the amount of remuneration to the instructor. So it could be normally, अगर मैं आपसे example share करूँ तो for example, there's this guy in our team, and he is in our US office, and he is right now gearing up to teach a course on I believe that's data security, and there's a team of there's a customer जिन्होंने कहा कि आप मेरे ना technical team के इन लोगों को ये solution इसका course पढ़ा दें. So there are I think 5 to 6 guys probably, मुझे इनका exact number नहीं पता, and that's how a typical class size could be. Of course, it varies from customer to customer. So I believe that's I've answered your question. Does it make sense? Okay, ठीक है, thank you. Yes, it is understandable कि जिनको train कर रहे हैं, they would be useful for the industry or that company later on. Fine. एक और चीज, आप जिस for example, I was wondering कि आपने ये तो teaching जो faculty है उसके लिए तो चलिए बात समझ आ गई. But if we have students, for example, who are interested to get into this activity, maybe वो बहुत expert तो नहीं होंगे beginning में, but if they are ambitious, they can come to you, join, and then they can you can see if they are useful, if they are working hard, or could those be placed, or could those students be involved in any activity? Would that be a good thing to do? Of course, this is the excellent thing to do. I mean, what can be a better than giving a kid a job? So of course, yes, and it could be in the form of starting with an internship, and if they are providing value, that turns into a paid internship. If they become really good at a product, that converts into an associate, and then of course there are roles specific to their specialization. It could be an administrator, they could become a deployment professional, they could become a developer, they could become an analyst, or maybe at later stage of the career as solution architect. Okay, nice, thank you. Any other question? Any other question? Not from my side at least, sir. चलें, if there is, जी अब्दुल गनी, जी सर, मैं कुछ ये सर अर्शद साहब ने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि स्टार्ट जो बेसिकली जो करना है, बेसिकली थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप गाइड कर दें तो थोड़ा सा पूछना चाह रहा था. स्टार्टिंग कि सिरा कहाँ से हमें पकड़ के आगे चलना चाहिए? सॉरी, कहाँ से? वो ये कह रहे हैं कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए. अब्दुल गनी, ये हाशिम ने बताया है, वो मेरा ख्याल है शायद आप उस वक्त मिस कर गए. सो मेरा ये मशवरा होगा, हाशिम ज़रा ब्रीफली बता दीजिए, और फिर आप हाशिम को इंडिविजुअली ईमेल भी करेंगे तो उसमें भी वो आपको सारा एक्सप्लेन कर देंगे. अभी शॉर्ट ज़रा बता दीजिए. Sure. So Abdul Ghani, what you can start by is first identifying the technology area that you're interested in. Right now there are 4 tracks that are available. It could be artificial intelligence, it could be IoT, it could be cloud, or it could be cybersecurity. Once you've identified the area, then these are whole universes. Then you identify the specific sub area that you want to work in. Within cybersecurity, on our website, there are a couple of areas that we are focusing on. They include the
cloud packs for security. In AI domain, automation is a huge uh, is a hugely important skill these days. So that could be one thing. In IoT landscape, IoT platforms which helps you manage all the connected devices. That's another area that you can become expert in. In cloud domain, you can be a cloud deployment professional. You could become a cloud administrator. So once you've made the technology area choice, then you define what kind of a role and what kind of a specific technology that you want to choose. Once you have chosen that, they are available on our website, and that is जाफर जरा chat में please paste कर दीजिएगा. आप उनको go through करें and then send me a text even if you need any help doing that. So you can send us an email or call me, and I can sort of guide you looking at your resume. Thank you, sir. शुक्रिया सर. चले, आई थिंक 6:30 तक हमने डिसाइड किया था कि वी विल एंड दिस सेशन, सो इट्स 6:30 नाउ. थैंक यू वेरी मच एवरीबडी. और अगर फर्दर क्वेश्चन हो, यू कैन रीच हाशिम और माई सेल्फ और जाफर और उमर, एनीबडी फ्रॉम आवर टीम. वी विश यू गुड लक फॉर द फ्यूचर. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. Yeah, thank you, Dr. I just pasted my mobile phone, so if anybody would like to talk, I'm available. Thanks again. Thank you for joining. Okay. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.